presents Leaders of Tomorrow. I am Ritu. Leaders of Tomorrow is an inspiring and thought-provoking series that aims to showcase the stories of exceptional individuals who are making significant contributions to their communities, industries, and the world at large. Each episode delves into the lives, challenges, and triumphs of these emerging leaders, providing viewers with a unique and intimate look at the diverse paths they have taken to become the influential figures of tomorrow. On today's episode, we will be in conversation with Transasia Biomedicals Limited, followed by MyGate. Transasia Biomedicals Limited, India's leading in vitro diagnostic company, offers products and solutions in biochemistry, hematology, coagulation, ESR, immunology, urinalysis, critical care, diabetes management, and molecular diagnostics. Headquartered in Mumbai, Transasia is a part of the global Transasia Urba Group. The group has production sites in India, Czech Republic, and USA, and R&D centers in France, USA, UK, India, and Czech Republics. With a vision of being committed to a healthier and happier world, Transasia continues to provide doctors and patients with reliable, affordable, and innovative medical diagnostic systems. We're in conversation with the founder, chairman, and director of Transasia Urba Group, Mr. Sur Vasani. It's a pleasure to speak with you, sir. Thank you. Pleasure to be here. Let's begin by getting to know a bit about the journey that led to the establishment of Transasia Urba. It's been a long journey, 44 years to be exact, since I founded Transasia. Fortunately, I met some wonderful people at that time. One of them was Mr. Jayaprakash Narayan, who, as you know, was a very popular people's leader. And I continued working with Jayaprakash ji to the extent that after a couple of years, he had a kidney failure where he needed to be on dialysis every second or third day. And India hardly had any facilities. And as a result, unfortunately, he died soon after that. But left impression on me as a young man, and also led to the question what I can do to help that process. And I had a realization that I am meant to do something about the healthcare, to help build a strong, people-oriented, affordable healthcare in India. And it's better for India to focus on prevention. And prevention comes through diagnosis. So that day I set my mind that, okay, I will get into diagnosis and help Indians diagnose their health so that they can take care of the health and remain healthy. So that was the seed on which Transasia was founded. So we've seen a significant shift towards Make in India and Develop in India, especially in the medical devices sector. So how do you position yourself in this transformative era? Very happy that this shift towards Make in India has happened. So even though now it has become a popular term, but it was in 1991 that we started making in India. So 1991 we came out with a small blood analyzer and became a great hit because very affordable prices. It was Make in India. It also made many people happy and proud that we have Make in India. As a result, today we have 5 manufacturing plants in India making all kinds of equipment. And fortunately, not only for India, I believe that Make in India for the world. So our products are now being exported to more than 120 countries across the world. Would you like to tell us more about where you're placed globally? We have our own subsidiaries in 12 countries across the world where we have our own people working. But as you know, the healthcare and medical devices is a high technology thing. So it's not enough to say we make in India, because making comes only after you develop it. So it's very important to also have the capability to develop, to do research. So over the last 15 years, we have acquired about 12 companies in Europe and America who had the right technology.
so that we can develop the technology, we can do research, at the same time expose our Indian engineers to learn from them, and help build the research facilities here. Our R&D and the technology is a backbone, followed by the Make in India together, so that we are totally an integrated company. We can look ahead to the future, what India will need, what kind of diseases we need to deal with. So it's very important to have a strong, domestic Indian research base which can cope with the demand whenever it comes, and develop it, make it, and if possible, also share it with the rest of the world. So like we made the COVID test kits here, but we were also able to export to many countries who were not able to get it. So that's something I feel as an Indian, that we are able to contribute to the rest of the world, especially the developing countries. Lastly, sir, I'd like to know, it's been 44 years. What keeps you going? Unfortunately, even today, almost 70% Indians have not done a blood test. So our job remains incomplete until we see every Indian do at least one blood test in a year. And I think in a short time, we will really see this dream of every single Indian do at least one blood test per year will come true. Thank you so much for speaking with us. It's not often that we get to speak to benevolent businesses that are not just worth billions, but also impact a billion lives. Thank you. Thank you. And that makes me feel really rich that we are able to help so many people. That's a real wealth. Having spoken to founder, chairman and director at Transasia, Mr. Sur Vasani, we're now in conversation with director, business partner and life partner, Mrs. Mala Vasarani. Pleasure to speak with you, ma'am. Delighted to be here, Ashmita. I want to understand from you, when we speak to ordinary people about healthcare, they speak about good hospitals, good doctors, good treatments. But where does good diagnostics come into the equation? I think to get the right treatment, the diagnosis has to be correct. For this giving you a right diagnosis, he relies on excellent diagnostic data. This is the test results from the blood test reports. The blood, urine, stool, these form 95% of the evidence-based data that the doctor relies on to make a good judgment about how to treat you. But I would say even more important is the blood test for people who are well, to ensure their wellness and their well-being. Because if you do preventive blood tests, we know early on when certain symptoms are setting. Before even you sense the symptoms, it will show in your blood test. And you can take very quick, very painless, very probably cheap remedies and maybe just simple lifestyle changes to ensure that you stay healthy. But where do you find out? You find out from doing preventive blood tests and preventive medical checkups. They are the foundations of good medical care. So I would say the best treatment starts with an accurate, reliable diagnosis, a blood test, for sure. Could you please tell us more about the equipment that is used, how reliable it is, how important is reliability when it comes to equipment for diagnostics? The blood testing analyzers are very sensitive equipment, and they need to be serviced by well-trained engineers to keep them working optimally. And the lab itself needs to enroll in quality control programs, preferably by the company that is providing you the equipment, because they only know how it functions best. And if all this is in order, then you're in good hands. I would say the patient is in good hands. And that's what Transasia is all about. We are passionate about providing the lab with the entire solution. We are partners with the doctor in the lab, in the pathologist in the labs, because the pathologist
really have the whole hospital and all the doctors relying on them for the blood test. And if they don't have in the background, in the lab, a company that's as devoted, beyond the call of duty to serve the patients like Transasia is, they could be in a lot of trouble. Because to get engineer to service a machine that is installed in some remote place, there are not too many companies that will do that, especially if there's no money to be made at the end of the day from it. Right. But for us, it is absolutely, it's what we identify as the reason to be. For example, in Kargil, we got orders from the army, and without hesitation, our engineers packed up, got onto the truck with the soldiers and went straight to the battlefront. This just tells you, the need of diagnosis is something you can never predict, but it's a life-saving service. Thank you so much. Thank you. भारत के शीर्ष 50 शहरों में 1.5 करोड़ से अधिक भारतीय परिवार गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं। अगले 10 वर्षों में यह संख्या 7% CAGR से बढ़कर 2031 में 3 करोड़ से ज्यादा घरों तक पहुंचने की संभावना है। इसे MyGate ने सुनहरे अवसर के रूप में देखा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जो सोसाइटी के सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के हर पहलू को आसान बना सकता है। आज MyGate देश भर के 25,000 से अधिक गेटेड कम्युनिटीज में है और बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर की आशा रखता है। MyGate की स्थापना 2016 में पूर्व IAF पायलट विजय अरिसेट्टी ने अभिषेक कुमार और श्रेयांश दागा के साथ की थी और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन कम्युनिटी मैनेजमेंट ऐप बन गया है जो सोसाइटी के लगभग सभी पहलू जैसे सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, एमिनिटी बुकिंग, टिकटिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही अनूठा प्लेटफॉर्म है। आज MyGate 27 प्रमुख शहरों में संचालित है और 35 लाख घरों में 25,000 कम्युनिटीज को सेवा प्रदान कर रहा है। अपनी तरह का पहला होने की वजह से 2016 से आज तक MyGate 82% बाजार हिस्सेदारी के साथ उद्योग में अग्रणी बना हुआ है। सोसाइटी में आने वाले गेस्ट्स की एंट्री प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने के लिए MyGate के QR बेस्ड इनवाइट सिस्टम ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये फीचर न सिर्फ आपका और आपके गेस्ट का कीमती समय बचाता है बल्कि सोसाइटी गेट पे होने वाली परेशानियों से निजात दिलाता है। विजय अरिसेट्टी MyGate के को-फाउंडर और CEO, NDA और ISB के एलुमनस हैं और शौर्य चक्र पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। अपनी उद्यमशील यात्रा शुरू करने से पहले ये गोल्डमैन सैक्स में वाइस प्रेसिडेंट थे। विजय जी नमस्ते, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। नमस्ते। MyGate शुरू करने का विचार कैसे आया? तो एक्चुअली कॉर्पोरेट में रहने से पहले आई वाज विद द इंडियन एयरफोर्स, तो वहाँ पे हम लोग को रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ वर विद इन द कंटोनमेंट एरियाज एंड ये सब कंटोनमेंट एरियाज में काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी होता था एंड कोई भी अंदर आने वाले लोगों का वैलिडेशन होता था, उसके बाद ही अंदर भेजा जाता था सो दैट ऑल द फैमिलीज आर हैविंग ए सिक्योर लाइफ। जब मैं बाहर निकला आई स्टार्टेड स्टेइंग इन द गेटेड कम्युनिटीज़। मैंने देखा कि ऑल दोज थिंग्स दैट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन द आर्म्ड फोर्सेस आई एम मिसिंग ऑल ऑफ देम एंड देन मैंने सोचा कि सिक्योरिटी गेटेड कम्युनिटी में कैसे बढ़ा सकते हैं जी। आज की डेट में आप देखोगे तो करीब 1.5 लाख गेटेड कम्युनिटीज़ है इन द कंट्री एंड इन सबको सेम प्रॉब्लम जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ हर जगह सेम प्रॉब्लम हो रहा है। आई सेड कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ जी। बिकॉज इवन गेटेड कम्युनिटीज़ में आजकल अर्बन सिटीज़ में आप देखेंगे तो बहुत तरह के लोग आते हैं। डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, आपके घर में काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्प्स आते हैं, आपके रिलेटिव्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके घर में कुछ काम करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं। इन सबको मैनेज करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था सिक्योरिटी गार्ड को। अगर आप देखोगे तो 100 फ्लैट वाला गेटेड कम्युनिटी में दिन में करीब 500 से 600 गेस्ट आते हैं एंड ये 500 से 600 गेस्ट 1-2 घंटे के अंदर आते हैं। उस टाइम पे वैलिडेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था सिक्योरिटी गार्ड्स को, बिल्कुल, एंड बहुत लंबा लाइन लग रहा था एंड एक बंदे को अंदर जाने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट हो रहा था। तो हमने सोचा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें एंड हमने बोला हाउ कैन वी यूज़ टेक्नोलॉजी
टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड हमने MyGate का स्थापित किया। MyGate की डायरेक्टरी इसके सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाले फीचर्स में से एक है। RWA का मेंबर हो या आपका कोई पड़ोसी, सोसाइटी में आने वाले सभी मेड्स या लोकल प्लम्बर का कॉन्टैक्ट, MyGate डायरेक्टरी पे आपके संपूर्ण नेबरहुड के कॉन्टैक्ट्स अपलोड होते हैं। आप MyGate ऐप की मदद से ना सिर्फ मेड्स ढूंढ सकते हैं बल्कि उनके पेमेंट्स और अटेंडेंस को भी बड़ी सहूलियत से डिजिटली मेंटेन कर सकते हैं। अभिषेक कुमार, MyGate के को-फाउंडर और COO, IIT कानपुर और IIM अहमदाबाद के एल्यूमिनस। उनके पास भारत, अमेरिका और जापान में 23 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। MyGate की स्थापना से पहले अभिषेक 6 साल तक गोल्डमैन सैक्स में वाइस प्रेसिडेंट थे। अभिषेक जी, MyGate की जर्नी में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आए होंगे। आप कॉम्पिटिटर्स से कितने अलग हैं? बिल्कुल उषा जी, जब हमने MyGate की स्थापना की 2016 में, हमने सुरक्षा का मुद्दा लिया गेटेड सोसाइटीज़ के लिए। उसके पहले कुछ कंपनियां थीं जो अकाउंटिंग या इनवॉइसिंग की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी सोसाइटीज़ के लिए। हमारी सफलता के बाद कुछ नए कॉम्पिटिटर भी आए इस स्पेस में, बट जो चीज़ हमेशा हमें आगे रखी वो हमारा इनोवेशन माइंडसेट। दूसरा, हमारा कस्टमर या ग्राहक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो पूरी गेटेड सोसाइटी है जी। उसमें जो परिवार रहते हैं, उसमें कुछ मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट है। हमने सबके लिए कई सारे अनूठे समाधान लाए हैं और इसके कारण जो निरंतर प्रयास हमारा रहा है कि हम कंटिन्यूअस इनोवेशन करते रहें, इसका सबूत ऐप स्टोर में हमारे रेटिंग से हैं। कुछ 1 लाख रेटिंग्स हैं जो हमारे 4.7, 4.5 हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे हैं। MyGate की जर्नी में आपको कौन कौन सी चुनौतियां आई और इस चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया? किसी भी सफलता के पीछे काफ़ी मेहनत रहती है, काफ़ी चुनौतियां भी आती हैं। जब हमने ये MyGate की स्थापना की और हमने सुरक्षा का मुद्दा को एक बहुत ही अनूठे ढंग से उसका समाधान किया, तो ये लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट और नया आइडिया था। तो शुरू के जो 100 सोसाइटीज़ थे, वो हमने एक एक करके सबको समझाया कि ये कैसे आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर जो गार्ड्स हैं उस समय आज से 7-8 साल पहले उन लोगों के पास उतना स्मार्टफोन्स नहीं रहता था। बिल्कुल नहीं पर हमारे जो सोल्यूशन है उसमें गार्ड्स के लिए हम पूरी ट्रेनिंग करते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती थी कि गार्ड्स को शुरू में स्मार्टफोन का उपयोग करना नहीं आता था। हमने उन्हें सिखाया और एक एक करके कई लाखों गार्ड्स को हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाया और सिखाया है। सबसे बड़ी चुनौती आई कोविड के टाइम पे। उस समय ऑफ कोर्स सोसाइटीज़ में लोगों का आना जाना बंद हो गया, तो हमने कई सारे यूनिक फीचर उस समय लॉन्च किए, जैसे कि टेम्परेचर और मास्क का स्टेटस विजिटर का, या कोई जो घर पे काम करने आ रही है वो शायद कंटेनमेंट एरिया से आ रही है, जो लोग गेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं उनके वैक्सीनेशन स्टेटस किया है। इन सब के कारण हमारी जो प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी है, MyGate की पॉपुलैरिटी और भी बहुत बढ़ी। और इस तरह एक एक करके जैसे जैसे चुनौतियां आई हमारी तरफ, हमने उनका दृढ़ता से सामना किया और उनको सॉल्व किया। MyGate बाय एंड सेल फीचर आपके लोकल मार्केट प्लेस की तरह काम करता है, जिस पे आप अपने नेबर्स को कुछ भी बेच या उनसे कुछ भी खरीद सकते हैं। आपकी कार से लेकर बुक्स तक MyGate पे लोग हर प्रकार के प्रोडक्ट्स बाय और सेल करते हैं। MyGate एक प्रॉपर्टी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। यहाँ आप प्रॉपर्टीज़ खरीद, बेच या रेंट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी डील्स के साथ। श्रेयांश दागा, MyGate के को-फाउंडर और CTO, IIT गुवाहाटी और ISB हैदराबाद के एल्यूमिनस। उनके पास भारत और अमेरिका में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। श्रेयांश ने पहले ओरेकल जैसी कंपनियों में प्रमुख नेतृत्व भूमिकाएं निभाई हैं। श्रेयांश जी, आज MyGate में कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं और इस फीचर से सोसाइटी और रेसिडेंट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है? उषा जी, MyGate बहुत ही इनोवेटिव एप्लीकेशन है जिसमें हर एक समस्या का समाधान है। एक रेजिडेंट की तरह अगर मुझे एक नई मेड ढूंढनी हो, मैं MyGate से ढूंढ सकता हूँ। अगर नया ट्यूशन ढूंढना हो अपने बच्चों के लिए, वो पता कर सकता हूँ। मुझे एयरपोर्ट जाना है तो कैब बुक कर सकता हूँ। अगर कारपेंटर या प्लम्बर ढूंढ रहा हूँ तो वो भी मिल जाएगा। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो MyGate पे नहीं कर सकते आपके अपार्टमेंट के अराउंड। इवन अगर आपको कोई सामान बेचना है, आपका पुराना सोफा फर्नीचर है, उसको MyGate पे डालिए, चुटकियों में निकल जाएगा। सो रेजिडेंट्स की लाइफ
अगर सुकून है तो मतलब माइगेट है तो सुकून है, ये कहा जा सकता है वाह। एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में। तो ये भी कहा जा सकता है कि अगर गेट है पर माइगेट नहीं है तो सोसाइटी नहीं है। आपको सोसाइटी चाहिए, एक खुशहाल सोसाइटी चाहिए, एक उन्नत सोसाइटी चाहिए, तो माइगेट होना चाहिए। श्रेयांश जी, आपको किन चीज़ों पे बहुत गर्व है? उषा जी, गर्व तो हमें बहुत चीज़ों पे है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि माइगेट एक प्रोडक्ट भारतीय समस्याओं के लिए ही बनाया गया था। ये कोई विदेशी आइडिया नहीं है जिसका कॉपी बनाया गया। हमने देखा कि क्या हो रहा है सोसाइटियों में, हमारी लाइफ किस तरह से चल रही है, हमने उसी तरह से बनाया। जो चीज़ एक 4 लोगों ने मिलकर एक छोटे से कमरे से शुरू की थी, आज वो दुनिया में 25,000 कम्युनिटीज़ में है। इंडिया में जी करीबन 35 लाख घर यूज़ कर रहे हैं। वाह। हम हर महीने करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा विजिटर्स को वैलिडेट करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आज विश्व का सबसे बड़ा सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो माइगेट है। श्रेयांश जी, आने वाले समय में आप माइगेट को कहाँ देखते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि हम भविष्य में अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी गेट हो वहाँ माइगेट होना चाहिए। एवरी गेट शुड बी माइगेट।